हेलो एवरीवन। तो कैसे चल रही है ऑडिट की तैयारी? राइट, डर लग रहा है? ऑडिट है ही ना डरावना, उसे इट्स कंसिडर्ड टू बी द विलन ऑफ ग्रुप वन। और तुम बोलोगे मैम क्या ग्रुप वन का पूरे सीए फाइनल का विलन है? मार्क्स ही नहीं मिलते मैम, पता नहीं। अभी लग रहा है कि इस टाइम फिर से ऑडिट की पढ़ाई की है, अभी फिर से लिख रहा है। तो मुझे ये बताना है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं एवरी टाइम टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, ऑब्वियसली वो आपको सेम रिजल्ट देगा, है ना? अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करोगे तो सेम आउटपुट निकलेगा ना उससे। तो जैसे मतलब अगर कोई तकलीफ है तो डॉक्टर ने बोला दवाई लेनी पड़ेगी, तो मीठी दवाई तो हम खुशी से ले सकते हैं, बट कड़वी दवाई बोलोगे नहीं 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 नहीं। तो जैसे ऑडिट के लिए ना थोड़ी कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी। तुम्हें लगता है हाँ ये टॉपिक्स मुझे अच्छे लगते हैं तो ये इतना मैं पढ़ लूँ, हाँ ये मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिट का ये आंसर होना चाहिए तो मैं वो लिख दूँ। तो फिर कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कैसे वो गैप बिल्ड होगी, ब्रिज होगी बिटवीन द गैप ऑफ यू गेटिंग a 30 or a 20 or a 25, anything less than 40 or less than 150 for the group, and then you are not able to bridge the gap or cover the gap between getting the 40 and where you need to get the 50, कि वो additional 10 marks, वो additional 5 marks, वो additional 15 marks के लिए क्या एक्स्ट्रा जो चीजें पसंद नहीं है, जो चैप्टर्स पसंद नहीं है, जिन चैप्टर्स का, जिन स्टैंडर्ड्स का ऑडिट में आपको डर लगता है, वो सारा आपको कवर करना होगा, है ना? आपको ऐसे कोई अलग अलग चीजें नहीं फॉलो करनी है, बस 2-3 फंडामेंटल रूल्स है ऑडिट की पढ़ाई के लिए जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे टेक्निकल टर्म्स, पेपर का ड्राफ्टिंग, आप कैसे आपका आंसर लिख रहे हो, क्या प्रेजेंटेशन है आपके कंटेंट का, अगेन इट हैज टू बी सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ शुड बी देयर इन योर आंसर। ये बीकॉम का तो पेपर है नहीं जहाँ पे ओनली क्वांटिटी मैटर्स, है ना? यहाँ पे इट इज क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द पेपर, है ना? तो जितना भी ऑडिट तुम्हें डराने की कोशिश करे, तुमने का डराने का नहीं या डरने का नहीं, है ना? कोई लोग हैं जो कॉकरोच से भी डर सकते हैं। तुम बोलो कि मैम ऑडिट इज नॉट लाइक इट्स लाइक अ डायनासोर फॉर अस। So, but no, it's just made up an image of itself in the mind, and then probably because it's a theory subject, it has some altogether different challenges also. I completely understand, but then we have to identify regarding the loopholes. So now identify the 10 standards. There are total 46 engagement and quality control standards. And look into 10 standards which you've not studied so far. Look into 3 chapters that you've not studied so far. Right? Like you might not have studied the chapter on the internal audit or the public sector undertaking audit, or तुम बोलोगे मैम ये digital auditing assurance chapter में हो क्या रहा है? What is going on in this chapter? So, studying it in bits and parts, cover, like 2-3 pages or 2-3 topics of a particular chapter on one day and lage hue rehna. Matlab, there is no benefit at all by complaining regarding what all are the loopholes or, what are your drawbacks regarding preparation for audit. Whatever it is, we have to ensure that you don't need to write the exam again. Am I sure? Whatever it is, it has to be sure that before the next attempt, you don't need to see me again on YouTube. You can see me on the Magnet Mind channel. Yeah, that's a different channel where we talk about the general philosophies of life, but not on the audit channel. You'll say, ma'am, अभी वो ऐसा सिचुएशन मत रखो कि कभी अलविदा ना कहना, अभी अलविदा कह दो ऑडिट को, है ना? स्टूडेंट लाइफ को अलविदा कहने का the time has come. Okay, right. So anyways, the topic which we have put in the heading of the YouTube thumbnail is that low morale in audit. So the point which I want to, A is equal to B, that if there is no morale in audit, how do you boost your morale in audit? For that, you need to do the topics which you don't like, the topics which you are scared of. You say, ma'am, I don't like them. So anyways, we are not supposed to marry them, right? So there's no question of a like or dislike, or whether you find it tough or difficult or complicated or whichever words we use. We have to bridge the gap of whatever that 5, 10, 15 marks we are getting less in the subject of audit. We need to cover those. Okay, right? So I hope that all of you study the 10 standards. You say, ma'am, 10 standards which you've kept in your least priority, and also 3 chapters which you have probably, not opened those pages in your books also so far, right? So wishing you all the very best for your studies. Happy auditing. Okay, bye-bye.